Good morning, UKG class. Today we will start our chapter 7. Okay, students? Chapter 7, Water Animals. So today we will study about water animals. Water animals. So let's start reading. First we will start reading. SOME some, ANIMALS animals, some animals, LIVE live, INN, WATER water. Some animals live in water. Now second line, SOME some, ANIMALS animals, CAN can, LIVE live, BOTH both, ON on, LAND land, AND and, IN in, WATER water. Some animals can live both on land and in water. Once again we will read. Okay, students? SOME some, ANIMALS animals, LIVE live, IN in, WATER water. SOME some, ANIMALS animals, CAN can, LIVE live, BOTH both, ON on, LAND land, AND and, IN in, WATER water. Some animals live in water. कुछ जानवर कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. पानी कहाँ मिलता है हमको? तालाब में मिलता है, नदी में मिलता है और समुद्र में मिलता है. ओके, पॉन्ड, रिवर एंड ओशन. ओके, सो सम एनिमल्स लिव इन river, some animals live in pond, small animals like frog, and most animal or water animals live in sea or ocean. Okay, students? Some animals can live both. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? बोथ मीन्स दोनों पर रहते हैं. दोनों किस पे? लैंड मीन्स जमीन पर, एंड इन वाटर और पानी के अंदर. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके, और यहाँ पर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. चलिए स्टूडेंट, अब हम उनके नाम यहाँ से पढ़ते हैं. वाटर एनिमल्स. ओके, टुडे आवर चैप्टर इज वाटर एनिमल्स, पानी के जानवर. ठीक है, जो जानवर पानी में रहते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे. TURTLE turtle, TURTLE turtle,
Turtle. 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 Okay students, turtle means कछुआ. Turtle means कछुआ. Turtle means कछुआ. Turtle, कछुआ. Now second, OCTO, octo, PUS, octopus. OCTO, octo, PUS, octopus. OCTO, octo, PUS, octopus. OCTO, octo, PUS, octopus. So octopus को हम हिंदी में भी ऑक्टोपस ही कहते हैं, ठीक है. ऑक्टोपस को ऑक्टोपस कहते हैं और टर्टल को कछुआ. नाउ स्टूडेंट्स लुक थर्ड, FISH, फिश. आई थिंक एवरीवन नो फिश. सब जानते हैं फिश को. तो FISH, फिश. FISH, फिश. FISH, fish. Fish means मछली. Fish, मछली. Turtle, कछुआ. Octopus, octopus. Fish, मछली. Now students look this one. DOL, doll. PHIN, fin, dolphin. DOL, doll. PHIN, fin, dolphin. DOL, PHIN, dolphin. DOL, PHIN, dolphin. DOL, PHIN, dolphin. डॉल्फिन्स हिंदी में भी वैसे डॉल्फिन कहते हैं और एक और वर्ड होता है इसका सूंस. सूंस. सो लेकिन हम इसको डॉल्फिन को डॉल्फिन ही लर्न करेंगे. ओके. डॉल्फिन. DOLPHIN, डॉल्फिन. DOLPHIN, डॉल्फिन. नाउ नेक्स्ट हियर WHALE, whale. WHALE, whale. WHALE, whale. WHALE, whale. WHALE, whale. So students, whale means whale. Okay. So octopus here. Octopus means octopus. Dolphin means dolphin. And whale means whale. We have to read same in Hindi and English. हिंदी में भी वही बोलेंगे और इंग्लिश में भी वही बोलेंगे. Now next, CRO, crow. CO, co, croco. DILE, dial. Crocodile. CROCO, croco. DILE, dial. Crocodile. CROCODILE, crocodile. CROCODILE, crocodile. Crocodile means मगरमच्छ. Crocodile means मगरमच्छ. Crocodile, मगरमच्छ. Now last, FROG, frog. FROG, frog.
F-R-O-G, frog. F-R-O-G, frog. Frog means मेंढक. Frog means मेंढक. Frog means मेंढक. So students, let's revise again. Turtle, कछुआ. Turtle, कछुआ. Turtle, कछुआ. Octopus, octopus. Octopus. Fish, मछली. Fish, मछली. Fish, मछली. Fish, मछली. Dolphin, dolphin. Dolphin, dolphin. Dolphin. Okay. Whale, whale. Whale, whale. Dolphin, dolphin. Yeah, next. Crocodile, मगरमच्छ. Crocodile, मगरमच्छ. And frog, मेंढक. Frog, मेंढक. Frog, मेंढक. Okay. 7 water animals. We have to learn 7 names of water animals. Let's students, now we finished our reading. And from students, from these animals, some animals live in water. Okay. Some animals live in water for their whole life. Whole life. कुछ animals ऐसे होते हैं जो अपने पूरी लाइफ में पानी में ही रहते हैं. एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपके पास फिश, मछली हमेशा पानी में रहती है. इफ फिश इज टेकन आउट ऑफ वाटर इट डाइज. ओके. अगर हम पानी में से उस मछलियों को या किसी एक मछली को भी हम बाहर निकाल देते हैं तो वो बिना पानी के जीवित नहीं रहती है. क्या होता है उसको? पानी से अगर हम निकाल देंगे, जैसे हमने बचपन में याद पढ़ी है पोयम, मछली जल की रानी है ना. मछली जल में रहने वाली है और अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. And that some animals are called water animals, but they can live both on land and in water. And some animals live on both. Before I told you, both means land and in water. कुछ animals water animals कहलाते हैं, लेकिन वो कुछ समय पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रह लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल. ओके. फ्रॉग और क्रोकोडाइल आपका ज़मीन पे भी, ये देखिए, ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. वो ज़मीन पर भी कुछ समय के लिए रह लेते हैं. तो ये वाटर और लैंड, वो इन वाटर और लैंड पे दोनों पे रह लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will start writing our classwork first. So open your classwork copy, write date and classwork. Let's start writing. Now start writing in your copy. Lesson 7, date, classwork. Question number 1. So always we complete 2 questions in your copy. Okay. So question number 1, WRIT, write NAME, name, OF, off, SEVEN, 7, WATER, water, ANIMAL, animal. So question number 1, write name of 7 water animal. Okay. So students, write neat and clean, press your pencil. So first we learn first letter capital T, U R T,
TLE, turtle. Okay, TURTLE, turtle. Second, OCTO, octo. PUS, octopus. OCTOPUS, octopus. Now third, yes, FISH, fish. FICH, fish. FISH, fish. Next, fourth number, DOLPHIN, dolphin. DOL, doll. PHIN, fin, dolphin. DOLPHIN, dolphin. DOLPHIN, dolphin. Next, WHALE, whale. WHALE, whale. WHALE, whale. WHALE, whale. Next, sixth number, FROG, frog. FROG, frog. FROG, frog. FROG, frog. Okay students, now 7, CRO, crow. CO, croco. DILE, dial, crocodile. CRO, crow. CO, croco. DILE, dial, crocodile. CROCO, croco. DILE, dial, crocodile. Okay students, now complete this in your copy. Write neat and clean. Press your pencil. Okay. Now students, you open your page, next page, new page. Write revision of lesson 5. Lesson 5, date, classwork. Yes, it's classwork, no? So it's revision. Today we finished our chapter 7, water animals. And now in chapter 5 what we learn? Question 2, write name of 10 bird. Birds name learn करे थे ना हमने lesson 5 में. So now we will write the bird's name. Write name of 10 bird. So first, EAGLE, eagle. EAGLE, eagle. Second, PIGEON, pigeon. PEPIGEON, pigeon. Third, SPRROW, sparrow. SPARROW,
double R O W sparrow. Now fourth, yes, P A double R O T, parrot. P A double R O T, parrot. Now fifth, okay. Fifth, P E A C O C K, peacock. P E A C O C K, peacock. P E A C O C K, peacock. Now next, sixth, D U C K, duck. D U C K, duck. D U C K, duck. Next, V U L, vull. T U R E, vulture. V U L T U R E, vulture. Vulture. Next, eighth number, O W L, owl. O W L, owl. O W L, owl. O W L, owl. Okay, now ninth one, K, first letter capital always. K I N G, king. F I S H E R, kingfisher. K I N G F I S H E R, kingfisher. K I N G, king. F I S H E R, kingfisher. Now 10th one, last, H E N, hen. H E N, hen. H E N, hen. These are name of birds. Okay, now students, look here. Write name of 10 bird. Okay, first look here. EAGLE, eagle. PIGEON, pigeon. SPARROW, sparrow. PARROT, parrot. PEACOCK, peacock. PEACOCK, peacock. DUCK, duck. DUCK, duck. VULTURE, vulture. VULTURE, vulture. OWL, owl. OWL, owl. OWL, owl. K
K-I-N-G, king. F-I-S-H-E-R, fisher, kingfisher. K-I-N-G, king. F-I-S-H-E-R, fisher, kingfisher. And last, H-E-N, hen. H-E-N, hen. H-E-N, hen. Now students, let me show you the birds pictures. In last period we studied about these, no? Chapter 5, here, birds. Here, eagle, pigeon, parrot, sparrow, peacock, crow, here, vulture, kingfisher, owl, duck, here duck, peacock, crow, hen. Okay, and there were some more birds. These birds cannot fly. Ostrich, this one, kiwi, this, and penguin. Okay students, now learn these with the spelling. Now students, open your homework copy and start writing. Write neat and clean. Press your pencil. Lesson 7 today we learned. Okay, we studied about it. Write date, homework. Question number 1, always we are completing 2 questions. So question number 1, W-R-I-T-E, write. N-A-M-E, name. O-F, off. S-E-V-E-N, 7. W-A-T-E-R, water. A-N-I-M-A-L, animal. So how many water animals we have to write? 7. Write name of 7 water animals. Okay, like this. I wrote numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and write neat and clean. Press your pencil and turn the page for question number 2. Now students, revision of lesson 6. In classwork we revised lesson 5 and now in homework revision lesson 6. Date, homework, question number 2, W-R-I-T-E, write. N-A-M-E, name. O-F, off. T-N, I-N-S-E-C-T, insect. Write name of 10 insects. I am repeating it. Question number 2, W-R-I-T-E, write name. N-A-M-E, name. O-F, off. T-N, I-N-S-E-C-T, insect. Write name of 10 insects and write number like this. If it's not fitting in your papers, you have to fold the page. How you fold the page? Like this. Fold the page. Okay, press like this and write number. Which one is not fitting in your page, what you will do? जो नंबर आपके पेज में नहीं फिट होगा उसको आप नंबर 1 के सामने लिखेंगे. ठीक है, write neat and clean. Press your pencil and numbering like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर 10 नहीं आएगा तो आपको यहाँ 1 के सामने लिखना है, फोल्ड करके पेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम शोइंग यू द चैप्टर 6, so you remember. Now look at this, lesson 6, insects. Okay, these we studied in last period. Look at it. And complete your homework properly. Okay, press your pencil, write neat and clean and dark. Okay
Okay students, now go to the washroom, wash your hands and ready for next period. Okay.